Conditional statements in PHP. So there are four conditional statements are there. Yeah, I have starting. Yeah. We are seeing about the conditional statements in the PHP. The first conditional statement is the if statement. What is if statement? Means suppose if you have to execute some code, if the condition is true, then we are using the conditional statement or the if statement. Then let's take one example. The syntax for the if statement is the if condition, then the curly brace open close. Inside that if it is the if body or the code you want to execute. So let's take one example. I have taken one variable. I have declared one variable and initialized 9 into it. Then if if dollar a sorry if dollar a is equal to 9, then echo condition is true. Okay, just save it and go to the browser. Open localhost slash demo slash what is my page name, first.php. See, this condition is, it prints the condition is true. I think I have left the this one. And so it prints the condition is true. If the condition is false, then it, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो इफ के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा हमारा जो कंट्रोल है. सो इफ आई चेंज हियर 10, then it will not print anything because there is no else, so it leaves the blank. If I give some statement outside the if, अगर मैं यहाँ कुछ इको करता हूँ, इको सॉरी after if statement, so it will print the after is if statement because it will not execute the if block because the condition is not true. Okay, the next one is the second one is the if else statement. Question mark, I'm going to comment this. The second one is the if else statement. What is if else statement? Means suppose if you have to check if the condition is true, then you have to print this code. Otherwise, you have to print the another code. Then you have to use this if else statement. सपोज अगर आपको कोई कोड यूज करना है, ऐसा कोड चाहिए आपको या फिर ऐसा कुछ प्रिंट करना है जिसमें कि अगर सही हो तो मुझे ये प्रिंट करे, अदरवाइज मुझे कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग इफ एंड एल्स. अगर कंडीशन ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द इफ ब्लॉक, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट द एल्स ब्लॉक. Okay, the syntax for the if else statement is the if condition, then it is the if body or the if block, and then if it is not true, then it will go the pointer will go to the else block,
and this one is the else body. So this is the syntax for the if else. Let's take one example for the if else. Let's comment this. I'm going to declare $a is equals to 10. Then if $a mod 2 is equal to 0, then echo even number semicolon, sorry, then else, then echo odd number. Suppose मैं क्या कर रहा हूँ, I am going to check. I have declared one variable a and I am initializing 10 in it, and I am going to check that the number is the even or not. So for what is even number? The number which is divisible by 2. So it is called as even number. So here I am checking if it is divisible, or if it will return the remainder 0, then this one is the even number, because 10 is divisible by 2. So it is an even number. So let's see what it will print. It will print the even number because 10 is an even number. Suppose I have changed the value as 11. So it will print the odd number because 11 is an odd number, because it is not divisible by the 2. So this is the if and else statement. Means if you have to check if you have to print some statements, like if the condition is true, then this statement, otherwise that statement, then we have to use that if else statement. The next one and the third one is the I'm going to comment this. The third statement is if nested if else. Nested if else statement. When we use when we are using the nested if else, suppose if you have to check the multiple conditions, if you have multiple conditions to check, then you can use the nested if else. अगर आपको multiple conditions check करना है, अगर ये condition सही है, then inside that if ये भी condition सही है, then you can use the nested if else. The syntax for the nested if else is, see, one syntax for the nested if else is if, then condition, if this, अगर ये condition true हुआ तो then, अगर हमें कुछ और कंडीशन एल्स इफ और ये फॉल्स हुआ, देन अगेन एल्स इफ, फिर से नेक्स्ट कंडीशन, एंड देन सो ऑन, जैसे ही चलता रहेगा, एंड इन द लास्ट द एल्स. सो दिस इज द syntax for the else if else if or the nested if else. Let's take one example. Suppose if you have to check the number, uh, yeah, if you have to check the, so I'm declaring three variables, a is equals to 10, $b
is equals to 20 and the dollar C is equals to 40. Then suppose if I have to check, if you have to find the greatest number, then in that situation we have to use the nested if else or the else if statement. See, if, sorry, if dollar A is greater than डॉलर बी अगर ये बड़ा हुआ तो देन इफ or we can use the and operator here. See, and dollar a is greater than dollar c, then echo a is greater, then else if dollar b is greater than dollar c, then echo dollar, sorry, b is greater, or else echo double quotes c is greater. So let's check what is the print. uh, let's refresh. Yes, it is printing the c is greater because the value of the c is greater. Okay, if I have changed the number as a 4, then the b is greater. Let's see what it will print. Yes, it will printing the b is greater. Again, if I am changing the value of uh, 14, then 2, and the a as a 30, then it will print the a is greater. So here I have to find the greatest among the three numbers, so I have to check the multiple conditions. Then in that case I have to use the nested if else or the if else if statement. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, if और if else if statement भी बोलते हैं हम लोग इसको. The next one is the switch case or the switch statement. The fourth one is the switch statement. Just comment this question mark. The fourth one is the switch statement. The syntax for the switch statement is the switch the variable, then the case 1 and the statement, then break. Remove this, or just I'm going to change in this only. Case 1,
then break. I'm going to copy this to C 3 case 2, then break, and the in last it is a default. There is no need to give the break after a default, because after default there is no any code or the no any case is there. uh, what happened? Yeah, I am telling about the switch statement. Yeah, what is switch statement? Switch statement comes in place of the nested if else. ये nested if else के जगह पे आया था, because nested if else supports or the compiler supports only the if else till 15 terms only. वो सिर्फ 15 टर्म्स तक ही if else को सपोर्ट करता है, तो कंडीशंस थे हम चेक कर सकते हैं. सपोज इफ यू हैव ओनली 10 कंडीशंस, देन यू कैन चेक by using the nested if else. And if you have to check the more than 10 or more than 20 statements or the conditions, then it creates an issue or it creates an problem, or it increases the size of the code of the if else, and it increases the complexity of the code. So in place of if nested if else, the switch statement comes. The concept of the switch statement comes because it is easy. So only we have to pass the variable here with the switch. It matches with the there are cases are given according to the there are some cases given, or the cases are depends up to you. आइए आपके प्रोग्राम और आपके जो भी कोड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने केसेस देने हैं आपको. सो इट मैचेस द केसेस जो भी हमने वेरिएबल्स पास किए हैं स्विच में, जो भी मैंने पास किया है. सो इट विल टेक ओनली इंटीजर एंड द कैरेक्टर. जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है इसमें हम लोग सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर ही पास कर सकते हैं. वी कैन नॉट पास द स्ट्रिंग इनसाइड दैट स्विच. ये जो हमारा स्विच वेरिएबल लिखा है हमने, इसमें जो भी वैल्यू जो आएंगे हमारे, दिस इज ओनली इट इज ओनली कैरेक्टर और द इंटीजर. सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर ही होंगे उसमें. हम उसमें स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं. वी कैन नॉट पास द स्ट्रिंग देयर. सो फर्स्ट इट विल मैच देयर केसेज आर डिफाइनिंग देयर. इसमें केस डिफाइन किए हुए हैं या फिर करते हैं हम. उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंग इट विल सर्च. अगर वो केस वन के साथ मैच करता है, देन इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट और द कोड ऑफ द case 1. Then the break, it breaks the switch statement and go outside the switch. If you not, it is mandatory to give the break after each and every case. हर एक केस के बाद हमें वो ब्रेक देना मैंडेटरी है, वो जरूरी है. क्योंकि अगर हमने किस केसेस के बाद ब्रेक नहीं दिया तो वो इसके नीचे जब तक उसे ब्रेक नहीं मिले तब तक वो सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है. इट विल एग्जीक्यूट ऑल द केसेस अंटिल इट विल फाइंड द ब्रेक. जब तक उसे टिल इट विल फाइंड द ब्रेक, जब तक वो ब्रेक नहीं मिलेगा उसे तब तक वो सारे स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करते जाएगा. सो इट इज मैंडेटरी टू गिव द ब्रेक आफ्टर ईच एंड एवरी केसेज. सो जो भी हमने वेरिएबल पास किए हैं उसमें इट विल मैचेज विद द केस. अगर वो केस के साथ मैच किया, अगर वो केस वन के साथ मैच किया, देन इट विल प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ द केस वन. देन ब्रेक विल गो आउट, द पॉइंटर विल गो आउटसाइड द switch statement, because break is used to break the loop or the break the statements or the break the that block of code. It will break the that block of code. So it will break the switch statement block, and then the pointer will go outside the switch. If the case 1 not matches, then it will go to the case 2. If case 2 will not match, go to the case 3, and that so on. If no one case will match, then it will go to the direct default variable or the default स्टेटमेंट. वो डायरेक्ट डिफॉल्ट के पास जाएगा. जो भी हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा एंड विल गो. द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द स्विच. जो भी हमारा डिफॉल्ट होता है वो सबसे लास्ट में लिखते हैं स्विच में, क्योंकि अगर सारे केसेस मैच नहीं हुए तो हम वो, जैसे कि हमारा इफ एल्स होता है ना, इफ एल्स इफ देन लास्ट में एक एल्स होता है. सो जस्ट सेम एज लाइक द डिफॉल्ट. अगर सारे कंडीशंस नहीं मैच किए तो वो लास्ट में जो एल्स होगा वो हमारा जो डिफॉल्ट होगा वो हमारा प्रिंट करेगा. Okay, let's see one example of the switch case.
to comment this and to see to shift question mark. uh, I'm going to pass the value $a is equals to 1 or the 5. I'm going to print the day's name according to the number of that day. So I'm going to start the switch and this $a case 1. If case 1 then sorry echo Monday, then break. I'm going to copy this control V case 2 Tuesday, case 3 Wednesday, case 4 Thursday, case 5 Friday. Sorry, this is the day. Trolley, then the 6th Saturday, and the 7 is the Sunday. Then we have to give the default statement echo please enter correct value. So as let's go to the browser and check. I'm passing the 5 there, so it will go to the first. It will check the case 1 not match 2 3 4 and then 5. So it matches with the 5, then it will print the echo and the break it will go outside the switch statement. Suppose मैंने यहाँ break नहीं दिया, suppose I have not given the break here and here also. मैंने अगर यहाँ दो break skip किया तो it will print first the Friday, then Saturday, then Sunday, then it will go outside the switch statement. Let's go to the browser and just refresh. See, first it will print Friday, Saturday, then Sunday. It's not in the new line because I have not used the BR here. So let's use the BR tag. Control C, Control V, Control V, Control V, Control V. It's passing. Let's just save. See, it will print first the Friday, then Saturday, then Sunday. After Sunday, it will get the break, so it will break the switch statement and go outside the switch statement. Okay, so it is mandatory to give the break after each and every cases. हर एक केसेस के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट देना जरूरी है, because without break statement it will print all sorry it will print all the statements
it will print all the statement or all the statement of the cases after till it will get the break. जब तक उसे ब्रेक ना मिले नहीं मिलेगा तब तक वो सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करते जाएगा. ओके, ये हो गया. अगर हमें कोई का केसेस मैच नहीं करते हैं, सपोज आई हैव entered 8 here, I am passing 8 here, so there is no any case 8 is there, so it will print the default value or the default statement, please enter correct value. Okay, this is the case statement in the PHP. Okay, ये थे हमारे सारे conditional statements, if, if else, nested if else, or the if else if, and the last one is the case or the switch statement. Okay, we have seen these four types of the conditional statement. किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? Okay, then the next is the loops in the PHP. Yes, how many loops are there in the PHP? कितने तरह के लूप होते हैं PHP में? Prajakta, yes, Prajakta, four, yes. Four loops are there in the PHP. You were saying there are four loops are there. Yes, while, do while, for, and the for each. Yes, there are four types of the loops. There are four loops are there in the PHP. So next topic is the, just comment this set question mark. Next is the loops in PHP. The first loop is the while loop. First one is the while loop. So basically, what is the loop? Means if you have to execute the same block of code again and again. अगर आपको एक ही ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर कोई सिंगल कोड है, अगर कोई भी कोड हो आपको, अगर उसे आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है until द कंडीशन इज ट्रू. अगर मैंने कुछ कंडीशन सेट किया कि हाँ इस कंडीशन जब तक ये ट्रू है तब तक मुझे ये स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना, ये कोड को बार बार प्रिंट करना है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द लूप्स. तो उस समय हमें लूप को यूज, वी हैव टू यूज द लूप्स बिकॉज इट, ये क्या करता है हमें, it helps in executing, if we have to execute the same block of code again and again, so we have to use loop there. There are four types of loop in the PHP: while, do while, for. These three loops are everywhere. We have read in C, C++, Java. ये चार loop आपने हर जगह पढ़ा है. In JavaScript also we have read the while, do while, and the for loop. In PHP there is one more loop is there, the for each loop. So we will see one by one each and every loop. First we will see the while loop. So what is while loop? The syntax for the while loop is the while, while condition, then the code. If the condition is true, then it will execute the code or the body of the while loop. Otherwise, it will go directly outside the pointer will transfer outside the while loop or the next statement after the while loop. Okay. See one example. Mm, See one example of the while loop.
I have declared first the initialization or the declarations part. Dollar n is equals to 10. Let's see, 5 only. Then while if sorry dollar n is less than equal to or the greater than equal to 0, echo dollar n, and I'm going to decrement the there is the pre-decrement. First it will do the processing and then increment. So first time I'm initializing the value of n as a 5. So it will come here, it will check if 5 is greater than 0, yes, then it will print the n. Again it will do the decrement of the n, means the value of the 5 will be 4. Okay, then again it will check 4 is greater than equal to 0, yes, true. Then it will go inside, it will print the 4. Then again decrement 3. If 3 is greater than equal to 0, yes, then it will print the 3 and so on. In the last it will as a 0. So 0 is greater than 0, greater than equal to 0. It is not greater than, but it is equal to. So it will print the 0 also. Then again decrement, it will be minus 1. The minus 1 is greater than or equal to 0, no, false. And that time the condition will be false and it will go outside the while statement, or the pointer will transfer directly after this closing braces. Okay, let's see the output. What it is printing. Just refresh this. Yes. Okay, just put br there. Echo dollar and dot and double quotes br tab. Let's see. First it will print the 5 4 3 2 1 0. After 0 the value of the n will be minus 1. So it will go to the condition and will check minus 1 is greater or equal to 0, no. So it will break the loop and go directly outside the loop. So this is the example of the while statement. Next one is the do while. Just comment this. The second one is the do while. Do while loop. The syntax for the loop while is the while loop is the what is the while loop? The next name of the while loop is the it is the pre-check loop of the entry control loop, because the while loop is also called as the entry control loop or the pre-checked loop, because it will first check the condition, then it will check the condition as the entry time, then it will execute the statement. But in case of do while, it is a post check loop of the or the exit control loop, because it in this do while loop it will check the condition as the exit time or the in the last. First it will execute the statement at once. अगर हमें इसमें क्या करता है, तो जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है, जो भी बॉडी होता है हमारा वाइल डू वाइल का, इट विल एग्जीक्यूट एट वंस ओनली, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा. And after that it will go to the check condition and check if the condition is true, then it will again execute the loop, or if the condition is false, then the it will transfer the loop or the pointer outside the loop. इसमें क्या होता है कि हमारा एटलीस्ट हमारा एक बार हमारा जो भी बॉडी होता है डू वाइल का, वो एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है. अगर हमें सपोज कुछ वैसा कोड लिखना है जिसमें हमारा बॉडी जो होगा लूप का, वो एक बार
एग्जीक्यूट हो ही हो, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो या ना हो, तो दैट प्लेस वी हैव टू यूज द डू वाइल लूप। उस समय हमें डू वाइल लूप यूज करते हैं, बिकॉज इट इज द एग्जिट कंट्रोल लूप। फर्स्ट विल प्रिंट द body or the statement of the do while loop, and then it will check the condition. If the condition is true, then it will again execute the body of the do while loop, and if the condition is false, then it will transfer the control directly outside the loop or the after the do while loop. Okay, let's see the syntax of the do while loop. First do, then the sorry then the curly braces, then the body or the loop body, and in the last while then the condition and the semicolon. In the do while, in the last there is the semicolon, इसमें लास्ट में सेमीकोलन होता ही होता है। Okay, let's see one example. Just I'm going to comment this shift question mark, declare one variable dollar a is equal sorry dollar a is equals to uh, 1, then do the condition echo echo dollar a dot semicolon double quotes br and the dollar a sorry plus semicolon, and in the last is the while semicolon, inside while there is a condition। so I'm going to the if अगर डॉलर कब तक चलना है, डॉलर ए हमारा लेस देन इक्वल टू 10 हो तब तक चलो। ओके, then go to the browser and just refresh this। there is one unexpected equal to where I have put it the equal to, oh sorry, double equal to I have put। Let's go to the browser and refresh, so it will print the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने कंडीशन गलत डाला, अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ, तो देखते हैं हमारा कि सिंगल टाइम हमारा एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है बॉडी। सो आई एम गोइंग टू पुट ओनली इफ डॉलर ए इज ग्रेटर देन 1। डॉलर ए 1 से तो लेस देन, आई पुट इट हियर डॉलर 1। क्या अगर डॉलर 1 1 जो है हमारा वो 1 से ग्रेटर है, नहीं है, वो इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, सो इट विल प्रिंट ओनली 1। और सपोज आई हैव एंटर 10, मैंने यहाँ 10 दे दिया क्योंकि वो 10 टाइम चले या ना चले। सो लेट्स सी द फर्स्ट टाइम द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट। इसमें फर्स्ट टाइम बॉडी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है हमारा, क्योंकि 1 हमारा 10 से ग्रेटर नहीं है। अगर हम वहाँ 1 भी देते तो वो भी वो फॉल्स ही रहता, क्योंकि इट इज इक्वल नॉट द ग्रेटर। सो जस्ट कंट्रोल एस, go to the browser and check। so it will first execute the body, it will print the 1, then it will check the condition। उसके बाद वो क्या कर रहा है, condition check कर रहा है। if a is greater than means 1 is greater than 10, no, then false, it will direct transfer the loop outside the or the control outside the loop। ये दोबारा उस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया। यही अगर ये करेक्ट रहता, सपोज मैंने यहाँ 12 डाला,
तो इट विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स, मीन्स फर्स्ट क्या करेगा, वो 12 प्रिंट करेगा एंड चेक करेगा इफ 12 इज ग्रेटर देन 10, यस। तो वो जब तक वो इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, इसलिए क्योंकि हमने सब उसके बाद जितने भी वैल्यूज होते वो सारे ग्रेटर होते ही जाएंगे, सो वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करते ही जाएगा कंडीशन। सो हम जो कंडीशन देते हैं लूप के लिए वो हमें देख कर देना पड़ता है। लेट्स सी हियर, अल्ट टैब, वो प्रिंट करता ही जाएगा, वो आप जितना नीचे जाओगे वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन दिया है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक के लिए दे दिया है। सो हमें जो भी कंडीशन देना होता है वो सोच समझ के देना होता है, क्योंकि अगर हम कंडीशन सही नहीं देंगे तो वो हमारा लूप जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते ही जाता है। सो फॉर गिविंग द कंडीशंस वी हैव टू सी इट इज नॉट गोइंग एज ए इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट जा रहा है या फिर हमने सही कंडीशंस दिए हैं लूप के लिए या नहीं। इस इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो सारा जो भी वैल्यू है हमारा वो ग्रेटर ही होते जा रहा है। सो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक हमारा लूप चलते ही जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा लूप। अब क्या हुआ, ये हमने कंडीशन फॉल्स दिया है क्योंकि ए में हमने 12 डाला है और चेक किया है कि 12 इज लेस देन 10, सो नो it is false, so it will print the 12 only. See here, it will print only 12 here, and then the loop will break and it will go outside the loop. ठीक है, next one is the, and the third one is the for loop. Rules after question mark. uh, Third one is the for loop. Third one is the for loop. बाकी सब लूप में हमें क्या करना पड़ता था, फर्स्ट हमें वी हैव टू डिक्लेयर और इनिशियलाइज द वैल्यू, then we have to check the condition in another line, and we have to do the increment and decrement in the another line. So ये थ्री वर्क्स जो थे हमें, डिक्लेरेशन, कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट, ये सारे क्या करने पड़ते थे हमें, तो हमें अलग अलग लाइन में लिखने पड़ते थे। बट इन केस ऑफ फॉर लूप वी कैन राइट ऑल दोज थ्री स्टेटमेंट्स इन द सेम लाइन और द सेम in the same parenthesis. Let's check syntax for the for loop is for, sorry, just put here, फर्स्ट क्या आएगा हमारा, डिक्लेरेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे चीज को एक ही लाइन में लिख सकते हैं बाय सेपरेटेड बाय द सेमीकोलन, सेमीकोलन से सेपरेट करके हम तीनों चीज को हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट एंड द इंक्रीमेंट एंड द डिक्रीमेंट पार्ट। ओके, वी कैन राइट द डिक्लेरेशन बिफोर द फॉर लूप, हम लोग को इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैंने बताया था जावा एज इन द जावास्क्रिप्ट आई हैव टॉट, जैसे हमने यहाँ डिक्लेरेशन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, मैं इसे डिक्लेरेशन इधर भी कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मैं लूप के अंदर भी कर सकता हूँ, बट इन फॉर लूप वी कैन राइट दिस थ्री स्टेटमेंट्स इन द सेम लाइन, सेम लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क कॉमेंट, वन एग्जाम्पल, $a is equals to 1 or 2, for, or we can directly write there for $a is equals to 1, $a is less than equals to 10, and $a plus plus curly braces
I'm going to print the echo dollar $a multiplied by 2 and by 2 semicolon. And one more thing, uh, dot double quotes the br tag. Let's go and see what it will print. So it will print the table of 2 till 10 terms. I am printing the table of 2 till 10 terms. So this is the for loop. We can also declare this before the for loop, and we can also do this inside the loop. But we have to give the place for that. हमें यहाँ blank छोड़ना होगा. हम ये डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये सेमी कॉलन नहीं देंगे, ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. हमें उसके सेमी कॉलन को देना ही पड़ेगा, तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज इट विल गिव द एरर. सो सपोज मैंने ये सेमी कॉलन हटा दिया. लेट्स सी व्हाट इट विल गिव. इट इज गिविंग एन एरर. Syntax, it will give the syntax error because I have written the wrong syntax of the for. सो इधर सेमी कॉलन देना जरूरी है, भले ही हम लोग ये डिक्लेरेशन ऊपर कर रहे हैं या फिर ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो ऊपर कर रहे हैं, बट हमें ये सेमी कॉलन इधर देना जरूरी है. ओके, सी इट विल गिव द आउटपुट नाउ. ठीक है, दिस इज द फॉर लूप. सॉरी, नेक्स्ट वन एंड द फोर्थ वन इज द, just comment this. Then next one and the last one is the for each loop. Fourth one is for each loop. Okay, for each loop. What is for each loop? Means it is used to print the array. अगर हमें array print करना है, if we have to print the array, so or if we have to print something like the key value pair things, अगर हमें की वैल्यू पेयर्स को अगर प्रिंट करना है, जो भी हमारे की वैल्यू पेयर्स में होते हैं, जैसे कि हमारा की वैल्यू पेयर्स में होता है इसमें, सो वी कैन यूज द फॉर ईच लूप फॉर प्रिंटिंग एन एरे. हम लोग फॉर ईच लूप को एरे को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, वी आर यूजिंग द फॉर ईच लूप. द फॉर ईच स्टेटमेंट इज यूज टू print the arrays. Means we can pass the values. Suppose when we will read the array now, that time we will see that for each loop in detail. Means we are passing the, in for each loop we are passing the values or the index of an array as an value. We are setting the index number as an value in the for each loop. The syntax for the for each loop is for each uh, for each we are giving array as value. Means we are passing the array as an value, and then we will print the code. And yes, we can see this is the syntax for the for each. Means we are passing or we are setting the array as value, and that after that we will print the values of an array. Let's see one example. In example we will see how we are setting the array as an value. uh, I'm declaring one an array here, dollar ARR is equal to array for declaring in, sorry,
For declaring array in PHP, we have to write like this. This is syntax for declaring an array. This is an associative array. When we will read the array, that time we will see. First, I'm going to store 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and the 0. Okay. I have declared an array in that I have stored the 10 values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the 0. Okay. After that, if I have to print the value of this array, we can directly print by using the index number. But for by using the loop, if we have to print, then we can print it by using the for each loop. For each loop is only used with the array. For each loop जो भी होता है वो हमारा वो सिर्फ हम लोग array को print करने के लिए ही यूज करते हैं. So for each dollar $arr, we are setting the array as the value. Means whatever, it's up to you what you want to give the value name or the variable name. Because I am storing or I am converting the array as in the variable. इस array को मैं as a value में से or the variable any name I am giving. Suppose I have given the arr value, कि array value. मैंने एक वेरिएबल लिया है array value. मैंने array को as a array value में सेट किया है. And then directly I will print the, मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल को यूज करके arr वैल्यू एरे वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली. अगर मुझे एरे के वैल्यूज को जो भी मैंने एरे में वैल्यूज स्टोर किए हैं अगर उसे मुझे प्रिंट करना है, देन आई एम गोइंग टू यूज द आई एम नॉट गोइंग टू use this array name dollar. I'm not going to use this array name for printing the values or the index values of the array. I am going to use because this value, this variable name, because I am setting the array as in this value. means array को मैं as a this variable में set कर रहा हूँ और मैं उस अब इस variable का यूज करके मैं print करूँगा. So I am going to print the echo double quotes value is dollar ARR value. I'm giving the statement. मैंने ये एक statement दिया है. We can also write this variable inside the double quotes. If you don't want to write it in the double quotes, then you can use it here. Close this double quotes and you can use here dot. After this, I'm also going to use one more dot here for giving the br, for giving the break, or for giving the new line. Let's go to the browser and the print thing unexpected in the line 241. I missed the semicolon here. Okay, then this print. See, the value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the 0. So मैंने क्या किया, मैंने I have set the array name $arr as this name. मैंने उस array name को इस नाम पे सेट कर दिया. एंड आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मैंने उस एरे के वैल्यूज को इस $arr वैल्यू नाम से यूज करके मैंने यहाँ प्रिंट किया है, उसको एक्सेस किया है मैंने इस नाम से. अब सो द फॉर ईच लूप इज यूज टू प्रिंट द for loop is for each array, sorry, for each loop is used to print the array. हम लोग for each को, for each loop को array को print करने के लिए यूज करते हैं. सो ठीक है, अभी हमने क्या सीखा, हमने टाइप्स ऑफ लूप्स देखे हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे हैं. इसमें कुछ प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड द लूप्स? समझ में आया? अंडरस्टूड? हेलो,
Am I audible? समझ में आया सबको ये लूप? For each, do while and the while. There are four types of loops are there in the PHP. Okay. Let's take 5-minute breaks. After 5 minutes, we will see the next topic in the PHP. Okay. Just only 5-minute breaks only.